Life, death, rebirth. These are the views in a commoner's mindset as hopes and beliefs that help prove means to an end. People all around each other go through two of these phases once in the cycle of life. When you take birth, the whole town rejoices and celebrates the upcoming of a new inheritance in the family. Afterwards, you grow up filled with hopes, dreams, and aims to live a life worth being remembered by future generations. Finally, you take your last breath and lay flat on Mother Nature, who introduced you into this world in the first place. Here, people bear witness to the fall of a significant era which you were an active participant by addressing your grave as they pass by. Then comes the phase of your life where you will be remembered and praised over several occasions whilst being shown good deeds by others in your surroundings. Or else get neglected and ignored by the people surrounding your final place of rest till you leave this world to embrace the afterlife. इस पार्क के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है जिसका नाम दरिया खान टॉम्ब है। और वो दरिया खान टॉम्ब का पूरा रखरखाव और मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है और वो एक काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। 1450 में लोधी वंश के जो राजा थे उन्होंने अपना जो सेनापति था दरिया खान, उसकी याद में ये एक टॉम्ब बनाया है। The tomb of Darya Khan is a well-made mausoleum within a group of other monuments which stand firm to this day in a small city called Shahibag, Ahmedabad, India. Although it is a part of a group of similar structures, another version is located in a redeveloped society of East Gilvinagar, New Delhi, India. The single monumental structure may not be blessed by the time and space of it being there from its formation, but it's the only one still standing strong and mighty on its own. Both the tombs were built as a mark of work to remember the legacy of the Chief Justice under the reign of Bahlol Lodi of the Lodi dynasty, known in all might as Darya Khan. The Lodi dynasty, under the authority of Sikandar Lodi and then replaced by Bahlol Lodi, ruled over India for almost a decade from 1456 to 1525. Darya Khan or Darya Khan Lohani was an influential official who took care of the matters put up to the then ruler by the people regarding the economy of India. Because of his excellent management skills in the dynasty, he was known all across lands and kingdoms afar. Also of his well-known personality, two tombs were built in that era in those days so they could value his goodwill and respect all of his great deeds across many generations that would witness the fall of a great strategist. But still the question remains in the people's minds as to which tombstone they would identify as the real resting place of the man himself. Even the tomb located in the society of East Gilvinagar has been harboring more than one of his deathbeds since its formation in the early 16th century. The tomb
of Darya Khan in the bustling society of East Kidwainagar, New Delhi, is a valid form of a masterpiece of artwork. It may be not the best piece of craftsmanship, but it managed to highlight the cultural influence of the Mughal Empire on architectural infrastructure. It can be seen by looking at the inner stone workings of dome walls in each of the four pillars across all corners of the square-shaped slab beneath the dome. These patterns of wall carvings incline the cultural influence of the Mughal era and spotlight the reign of the empire of the Lodi dynasty by showing a few historical moments from that era. As the outstanding Chief Justice might be felt by many of his fellow beings, the dome also reflects his persona by still being able to preserve its core form, design, and cultural influence on dome pavilions on each side of the held-up platform. Also, the properly intact tombstone is in the middle of it all, even when neglected, ignored, and forgotten by its known civilization, keeps the persona of him alive to this day. जो गुरुवार है थर्सडे, उस दिन कुछ लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और दरिया खान टॉम के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं और एक तरह से श्रद्धा भाव रखते हैं. After introducing the society to its new residents, the tomb finally got some needed love and consideration for its maintenance and redevelopment. The redevelopment of the grave and its nearby infrastructure began with the destruction of the old plots in the government plot plan around it, which started to take form somewhere around the year 2012. As the tomb itself is protected by the Archaeological Survey of India, only the park surrounding it was considered to be revamped to an entirely new backed garden. A well-made walking path protected by solid iron fences on the outer ring of the garden surrounding the park became a stronghold to guard and protect the tomb of Darya Khan for eternity. The residential life of East Kidwainagar is sprawling with various government officials, bureaucrats, lawyers, and different types of VIPs that are over and above the law that the ordinary men are in governance. इस कॉलोनी में मैं 3 साल पहले शिफ्ट हुआ था 2018 में, और इस कॉलोनी के बारे में मुझे इतना पता है कि यहाँ टाइप 2 से लेके टाइप 7 तक क्वार्टर है. टोटल क्वार्टर 4000 से ऊपर है. The occupants staying near the pavilion surrounded by well-leveled pillars of modernity get complete first-class services in terms of safety and security, shopping, outdoor activities, and many more the new society can provide to them. तो लोकेलिटी थी हमारी, चाहे E हो, D हो, A हो, एक फैमिली जैसे लोग रहते हैं. लाइन से घर है, सब एक दूसरे को जान रहे हैं, भाई वो फलाने का लड़का है, ये फलाने की लड़की है, सबसे बातचीत है. ऐसे गांव का माहौल होता है, वो माहौल था यहाँ पे. एजुकेटेड लोग भी थे, अनएजुकेटेड भी थे, सब थे, मतलब मिला जुला था. ऐसा था, मतलब फैमिली जैसे रहती थी यहाँ पे. The primary or central market is located on the western side of the Dome Monument and its surrounding park. 178
180 के करीब शॉप्स हैं इसके अंदर, ग्राउंड एंड फर्स्ट में। तो काफ़ी पहले से 2-3 मार्केटें टूटी हैं। नरोजी नगर, किदवाई नगर में 2 मार्केटें थी, उनको तो तोड़ के तीनों को यहाँ शिफ्ट किया गया। तो अच्छा है, किसी को फर्स्ट में मिला शॉप, किसी को सेकंड ग्राउंड पे मिली। तो बहुत अच्छा है, रीडेवलप हुआ है मार्केट में। पहले आधी मार्केट सामने थी, अगर आप देखें जहाँ सब्जी मंडी लगती है, ये मार्केट। आधी मार्केट आपकी D2 और C ब्लॉक के बीच में, जैसे 3 दुकान कहते हैं, और इसकी आधी मार्केट थी सेंट्रल मार्केट, जो इधर से आईने जाते वक्त पड़ती। तो 1, 2, 3 दुकानों को मिला के इधर दिया गया। The market itself is a giant complex holding various stores in compressed small rooms in each of its grounds plus 2 floors with some shops in the center of it all. वेंडर के हॉकर्स बैठते भी है शाम को, दैट इज पार्क के नियर बाई बैठते हैं मोस्टली। सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले होते हैं वो। In general, it is filled with various shops ranging from medicines to knitting of clothes, grocery stores to food vendors, giving that enriched experience of the South Delhi cuisine and many more the society can provide. East Kidwainagar, before being separated by a comprehensive transport path from its sibling West Kidwainagar, where the tomb of Darya Khan resides, was a part of a government-funded project built in the 1960s to form a modern household society. पहले जो पुरानी थी वो नीचे थी, ग्राउंड फ्लोर की थी, अब अच्छी है तो काफी लोग रह सकते हैं। पहले सर D2 फ्लैट्स जो थे ऑफिसर के लिए वो 110 के करीब थे, और जो टाइप 1 या 2 के लिए 3000 के करीब होंगे। ये कॉलोनी सारी मेरे सामने ही टूटी है, हमारे सामने टूटी है, हमारे सामने बनी भी है, सब कुछ हमारे सामने रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। तब ये रोड थी, ये घर था, इधर घर था, ये बिल्कुल सीधी रोड साउथ एक्स, इधर से गैप INA। तब ऐसा था, ये डबल स्टोरी थी, आज बनी है ये 6-6, 7-7 की और 14-14 मंजिलें। It is now being replaced with a modern flats in a high-rise building household infrastructure. 2013 में यहाँ पे एक पुरानी कॉलोनी की गवर्नमेंट की, उसके सारे क्वार्टर को उन्होंने तोड़ के इस नई कॉलोनी का निर्माण किया। 2013 से 2017 तक यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहा। बीच में कुछ कोर्ट केसेस की वजह से इसका काम थोड़ा डिले हो गया। फाइनली उन्होंने 2018 में सबसे पहले कुछ टाइप 2, टाइप 3 क्वार्टर हैंडओवर किए, उसके बाद उन्होंने टाइप 6, टाइप 7 क्वार्टर हैंडओवर किए। जब मैं इस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था 2018 में, तब बहुत ही कम लोग रहते थे। शुरू में कम ही लोग थे, तो इतना नहीं था, पर अभी सभी हो गया, फिल हो गया है, सारे क्वार्टर्स फिलअप हो गए। तो अब तो अच्छा चहल पहल रहती है, लोग मूव करते हुए दिखते हैं। The newly developed households now surround the whole circular area in which the dome is built as an extra layer of protection for the same. With the construction of the new flat-like building structures, the central market in the previous neighborhood also found some focused attention from the area's developers. 2012 से 17 तक खूब मिट्टी में बैठे अंदर, कोई कस्टमर नहीं था। अच्छा, हमारे सामने ही सारे फ्लैट बने। अच्छा, टूटे भी हमारे सामने, बने भी हमारे सामने। तो 2012 से 17 तक अंदर मिट्टी में ही कोई कस्टमर नहीं था, फिर भी बैठे ड्यूटी दी। Before the new construction took form, the old market was made of various individual shops grouped in one place. They are now part of a colossal structure in the shape of a shopping complex, holding them together under one roof of capital monopoly. The dome itself may be a mark of great architectural heritage, but no treasure can be kept safe and sound for a more extended period
without human intervention. यहाँ इस कॉलोनी के बीच में एक सेंट्रल पार्क है जो इनिशियली जब मैं शिफ्ट हुआ था 2018 में तब ये पार्क छोटा था, लेकिन उसके बाद उसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। The dome structure is surrounded by a pack of greenery in a circle lying flat on the ground near the lower platform. अगर आपने देखा तो गुम्बद के इधर पेड़ लगे हैं साइड में, वो फुटपाथ होता था जिस पे पब्लिक रात को घूमती थी शाम को। और फुटपाथ के इधर जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना घास में, ये रोड है जो गोल चक्कर बस गाड़ी साउथ एक्स फिर एम्स जाती है। तो गुम्बद तो आज तक वहीं अपने दायरे में ही है, बस ये रोड को कवर करके पार्क बना दिया गया। The pack of greenery around the dome went through a long and sturdy development process to become solid and broad outer protection for the dome's preservation. After the redevelopment of the area in East Kidwainagar, society's population is at an all-time higher than before. अभी जब से 2017 जो टूटा है कॉलोनी टूटी है 2012 से, तो इसको नए तरह का रीडेवलप किया गया है। टॉम को अच्छे से वो गार्डन बनाया गया है, इसके अंदर लोग अब अच्छे से वॉक करने आते हैं। अच्छे ऑफिसर सुबह शाम काफ़ी फुल रहता है, वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा बना दिया गया। Although the newly occupied flat owners replaced the old settlers, the activities in the area aren't in the view of slowing down any sooner. पार्क बहुत अच्छा है, दैट इज सेंट्रल। अब तो काफी बड़ा हो गया है, डेवलप। पहले जब हम शुरू में आए थे तब नहीं था, प्लांट्स और ट्रीज भी नहीं थे, अब तो काफी डेवलप कर दिया उन्होंने। तो ओवरऑल सब एज ग्रुप के मूव करते हुए दिखते हैं, दिन में ओल्ड एज वाले भी आते हैं। If taking into consideration the freshly developed park around the dome platform, Darya Khan's tomb has never been witnessed to have these many visitors at its presence since its inception.